अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे। इसमें लेसन 1 है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको स्क्रीन पर एक वॉल नजर आ रही होगी। इसे गौर से देखें और बताएं ये वॉल किस चीज से मिलकर बनी है। सो दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स जो हैं वॉल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आपको ये स्क्रीन पर छोटे छोटे से सेल्स नजर आ रहे हैं। ये सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तमाम जानवरों के। तमाम बड़े बड़े जानवर ऐसे करोड़ों अरबों सेल्स के मिलने से बने हैं। तो ये सेल्स इन बड़े बड़े एनिमल्स को बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये बड़े बड़े तमाम एनिमल्स छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स से मिलकर बने। सो these cells are structural unit of all the animals. अब आप इन सेल्स को जूम करके देखें, आपको हर सेल के अंदर एक नई दुनिया नजर आ रही होगी। सेल के अंदर बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब आप स्क्रीन पर ये प्लांट सेल्स देख रहे हैं। ये प्लांट सेल्स बड़े बड़े ट्रीज को बनाते हैं, पौधों को बनाते हैं। अब इन प्लांट सेल्स को जूम में देखें, आपको सेल के अंदर कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सो इस सारी डिस्कशन से, एक्सप्लेनेशन से हम कंक्लूड करेंगे ऑल द ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स are made up of smaller living building blocks called cells. ये रॉबर्ट हुक है, एक बहुत मायानाज बायोलॉजिस्ट। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट की, डिजाइन की। इस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने प्लांट्स के छोटे छोटे स्लाइसिस, थिन स्लाइसिस, बारीक स्लाइसिस लिए, उन्हें ऑब्जर्व किया। तो उसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट से नजर आए जिनको सेल का नाम दिया गया। इस तरह से सेल इन्वेंट हुआ। All the organisms, plants and animals are made up of small building blocks called cells. ये रॉबर्ट ब्राउन की, रॉबर्ट हुक की फाइंडिंग्स थी। आपको ये राउंड शेप सेल नजर आ रहा है और रेक्टेंगुलर शेप सेल नजर आ रहा है। ये राउंड शेप सेल जो है एनिमल सेल है, और दिस इज प्लांट सेल। अब ये इनके ऑर्गेनेलिस के नेम्स हैं। न्यूक्लियस, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। ये वो ऑर्गेनेलिस हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद है। इसके अलावा प्लांट में कुछ एडिशनल ऑर्गेनेलिस भी हैं जिन्हें हम देखते हैं। दीज आर क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल वॉल। अब हम एक एक करके इन सारे ऑर्गेनेलिस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस देखेंगे।
न्यूक्लियस ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है. इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए. तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है. एक न्यूक्लियस सेल के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट्स अ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स. ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज हुई है. राइबोसोम स्टडीड ऑन इट. आपको रेड शेप के राइबोसोम नजर आ रहे हैं जो इसके ऊपर चिपके हुए हैं. These ribosomes involves in protein synthesis. आगे बढ़ते हैं. Next is mitochondria. Sorry. Next is ribosomes. These are granular in shape. They are found in two forms. Attached to endoplasmic reticulum, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. Red colored granulars attached to endoplasmic reticulum. और ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं. देयर फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is a membrane-bound organelle. It is also called powerhouse of the cell because it involves in energy production by the process of respiration, a cellular respiration. Next is cytoplasm. We see the cytoplasm. Cytoplasm, it's a jelly-like substance. Everything inside, everything else in the cell suspended in it. So हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो सारी स्पेस है उसे फिल करता है. Next is the cell membrane. It is outer thin flexible membrane. In animal cells, in plant cells, it is next to the cell wall. It involves in transport of materials. Now we will discuss the organelles that are present only in plant cells. First of all, we will discuss chloroplast. These are membrane-bound organelles having green pigment inside them. Their function is to do photosynthesis. They trap sunlight and produce energy. Next is vacuole. Vacuole is membrane-bound organelle. It stores water. It maintains water potential. And next one is cell wall. This is the outer thick covering in plant cells, only in plant cells, made by cellulose. It gives structural protection to the cell. Next is levels of organization. Cell, the smallest level of organization.
Lot of cells grouped to form tissue. Tissue is the little bit greater level of organization. Tissue is formed by grouping of cells and many tissues grouped to form an organ. Many organs grouped to form an organ system. Many organ systems combine to form an organism or an individual. This is higher stage of organization. Now we will discuss their definitions. What's the definition of cell? Cell is smallest structural and functional unit of an organism. Now we will discuss the definition of tissue. Tissue is a group of cells with similar structures working together to perform a shared function. Now we will discuss the definition of organ. Organ is a structure made up of a group of tissues working together to perform specific functions. Now we will discuss the definition of organ system. Organ system. Organ system is a group of organs with related functions working together to perform body functions. Now we will discuss the definition of organism that's higher level of uh, organization. Organism is an individual living thing that carries life activities by means of organs and systems. The end.